Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. There was an English working family, living a pretty modest life, when a visitor shows up. A sergeant major, just back from service in India. Mm-hmm. And this soldier, he pulls out this strange little thing, a talisman. It's a dried, shrunken monkey's paw. 3 wishes to 3 different owners. Yeah. But the point wasn't to be generous. It was specifically to show how dangerous it is to try to defy fate. Right. The previous owner's last wish was for death. That tells you everything you need to know. It really does. So the family, they're skeptical at first, of course, but eventually, temptation wins out. The father, kind of intrigued by the whole thing, he wishes for a modest sum. 200 pounds. And it isn't long before there's a knock at the door, but it's not the delivery they were expecting. It's a very solemn gentleman, well-dressed, from the factory where their son works. He brings news. Just terrible, devastating news. Huh. Their son had been killed in an accident at the factory. And the company, while, denying any legal responsibility for what happened, they offer a financial settlement out of sympathy. And that settlement for their loss was for precisely 200 pounds. The wish was granted. Exactly as it was asked. Right. But the outcome was just horrific. They got the money, but they got it as compensation for losing their son. This simple, chilling story. Mm-hmm. And you find others like it across cultures, right? The legend of the Golem of Prague or the genie in the lamp from 1,000 Nights and a Night. Mm-hmm. They all point to the same thing. They all illustrate the same critical danger. The peril of using any system, whether it's magic or highly automated AI or complex algorithms, that is, and I love this phrase, singularly literal-minded. The machine, or the magic in this case, it grants the command exactly as stated. There's no consideration for the moral costs or the assumptions you thought were built in or what you really wanted as a human outcome. If you ask for 200 pounds and you forget to explicitly say, and my son must survive, well, the literal-minded system will just find the most efficient path to deliver 200 pounds. It doesn't care about the ethical consequences at all. And that horrifying constraint, that tyranny of literal execution, that is the very essence of the ethical prophecy we're about to explore today. That cautionary tale is really the thematic core of Norbert Wiener's 1964 book, God and Golem, Inc., a comment on certain points where cybernetics impinges on religion. So our mission for our time together is to provide a kind of map, a comprehensive guide through the profound mind of Norbert Wiener. He is, and rightly so, considered one of the foundational prophets of the computer age, the father of cybernetics. And for you, our listener, especially if you're just starting your own academic research journey in something like AI ethics, this is, it's the essential starting point. It really is. Wiener himself was such a fascinating figure. Born in Missouri in 1894, an American mathematician and philosopher, but also a true intellectual prodigy. A genuine prodigy. Oh, absolutely. His father, Leo Wiener, was a well-known Slavic language teacher and a huge mathematics enthusiast. He actually homeschooled Norbert and just nurtured this exceptional talent from a very early age. And the results were, they were astounding. Wiener graduated from Tufts College with a bachelor's in math at the age of 14. 14? Yeah. And then he completed his PhD at Harvard University before he even turned 20. Just think about that for a second, the level of intellectual velocity. After that, he did postdoctoral studies with absolute giants in the field, people like Bertrand Russell and David Hilbert over in Europe. Then he joined MIT, the Massachusetts Institute of Technology, in 1919. And that's where he spent the vast majority of his really influential career. His early research was very focused on applying probability theory to random processes. He made some really important contributions to the study of Brownian motion, that erratic, random movement of particles suspended in a fluid. But it was really the urgency of World War II that crystallized his major contribution to global thought. Yeah. During the war, Wiener's expertise in handling these random processes became instrumental for military research. He worked specifically on developing automated control systems for anti-aircraft defense. And that task was incredibly complex and absolutely critical. The goal was to create mechanisms that could predict the likely trajectory of an enemy plane in real time, even when its movements were, by their very nature, unpredictable. And it was the success of that theoretical work for those anti-aircraft systems, predicting the future based on communication and feedback, that formally laid the groundwork for the field he would define, cybernetics. Which he defined as the study of control and communication in the animal and the machine.
It's such a beautifully concise definition. It is. And crucially, even back then, in the 40s and 50s, Wiener was already foreseeing the core ethical issues that we are still debating so vigorously today. Things like the impact of intelligent automation on labor, the potential for machines to exert autonomous influence, and the delegation of moral authority. He was decades ahead of his time. This book, God and Golem Inc., it's short, it's powerful, and it synthesizes all those long-standing ethical concerns in such a profound way. It's based on a series of lectures he gave at Yale in 1962, and then a seminar he led later that year near Paris. And the book was so insightful that it actually won the second annual U.S. National Book Award in the category of science, philosophy, and religion. But tragically, Wiener passed away in Stockholm in March of 1964, the very same year the book was published. Which means this work really stands as this powerful final testament to his ethical foresight. It's his last word on the subject, in a way. So as you begin your research journey, we're going to provide a structured analysis of this incredibly dense foundational text. Our goal is to really chart the territory of Wiener's prophetic warnings. Warnings about machines that learn, machines that reproduce, and the profound moral consequences of handing off our responsibilities to them. And we really have to emphasize this. This book is short. It's intensely concentrated. And it's open access. It is required reading for anyone serious about this field. So whether or not you subscribe to this channel, please make time to read this thoughtfully crafted piece of thought. The link is right there for you, waiting in the show notes. Okay, so let's jump in. Let's start with the structure that Wiener built, starting with his philosophical ground rules. Let's do it. Okay, let's unpack this opening chapter, chapter 1, which Wiener calls the cybernetic and the religious. He sets a tone here that is, it's stern, almost cold. He describes it as a surgical investigation. Yes, and he makes it immediately clear that he is drawing a very, very fine line around his subject matter. What do you mean by that? Well, his intention is precisely not to offer some grand discussion of religion and science as these, big, all-encompassing topics. Wiener is laser-focused. He only wants to look at those specific points of contact where the communication and control sciences, the core of cybernetics, actually impinge upon religion. So he wants to keep the discussion grounded. Grounded in measurable reality. And he wants to avoid getting entangled in all the logical paradoxes that just pop up the second you start discussing extremes. And those extremes, they're what always accompany the most rigid claims of religion, aren't they? Yeah. He intentionally sidesteps what he calls the absolutes. Precisely. He argues that if we start by talking about knowledge only in terms of omniscience, or power only in terms of omnipotence, or worship only in terms of the one Godhead, we immediately get bogged down in all these irresolvable metaphysical subtleties before we've even established a scientific framework. So what's his alternative? Instead, he treats knowledge, power, and worship as facts. Just facts. Facts that are subject to human investigation and accessible to the methods of the natural sciences. That seems like a pretty dramatic pivot. He's basically refusing the traditional starting point of faith. He is. He notes that these matters can be studied, they can be observed, and we can deduce conclusions about them without accepting the philosophical position of, the Latin is credo quia incredibile est. Which translates to? I believe because it is incredible. He is explicitly rejecting that leap of faith into the absurd. He's insisting instead on demonstrable, measurable, fact-based inquiry. For a mathematician who is grounded in the realities of control systems, belief has to come from evidence, not from the magnitude of the mystery. This detached, almost anatomical approach, treating something sacred as something you can dissect, that brings us directly to the risk he knows he's taking, the taboo against heresy. Absolutely. Wiener warns against what he calls the superimposed layers of prejudice that we all use to protect what we deem sacred. We avoid uncomfortable truths. We avoid dangerous comparisons because they threaten our sense of order, or maybe just our human vanity. And he points out that science itself, for all its commitment to truth, it has its own unwritten taboos. It does. It makes it professionally dangerous to run counter to the accepted hierarchies of what comes first, the accepted precedents. And the specific taboo he knows he's breaking is the comparison between living beings and machines. Why was that comparison so professionally perilous for a scientist back then? Because doing so risked the scientist's entire reputation for being, conservative and sound. The ingrained assumption, which holds this deep cultural and religious weight, is that living beings have functions tied to purpose and uniqueness and spirit. While machines are just metal. Right. They're made of metal and unorganized substances that lack the kind of fine structure that's relevant to their function.
So to challenge that sharp dichotomy, to even suggest that an algorithm might share functional similarities with a thought process, that risks a kind of scientific heresy. So he knows he has to be courageous. He argues the study must be undertaken honestly and courageously. He even references the serious risk of heresy by quoting a Calvinist, "Are you willing to be damned for the greater glory of God?" This work for him is a real probing of real questions. It requires the spirit of the operating room where truth is sought through violation, not the ceremonial feast. That brings us back to why he rejects those absolutes of omnipotence and omniscience. It isn't just a philosophical preference for him. It's a foundational mathematical constraint. And that is just so characteristic of Wiener's thinking. Exactly. Wiener sees these notions, omnipotence and omniscience, as being used as these loose superlatives. Just words for great power and great knowledge, rather than precise, metaphysically defensible statements. And from a mathematical perspective. From a mathematical perspective, the manipulation of the infinite, which is the domain of the omniscient, is inherently plagued by paradox. Can you elaborate on that a bit for our listener? Why does dealing with infinity break the system, mathematically? Sure. In mathematics, when you introduce concepts of infinity into even basic operations, you often create what are called indeterminate forms. The most famous examples are things like 0 divided by 0 or infinity divided by infinity. And in those cases, the result is undefined. It's undefined. The operation gives you no precise information. So Wiener, the mathematician, is arguing that if you assume a system has absolute infinite knowledge omniscience, you are immediately placing it into a realm where logical definition and rigorous calculation they break down. Concepts of infinity in counting also lead to famously complex paradoxes, like the ones in the Friedge-Russell paradoxes, where sets that contain themselves lead to a flat-out contradiction. So by focusing on the limited, the finite, the mathematically manageable, Wiener is ensuring the discussion can remain productive. He's keeping it grounded in the science of communication and control. Precisely. He's sort of forcing theology into a framework it might not naturally fit, but one that allows for rigorous study. That's a great way to put it. He says himself that he has to use limited analogies from cybernetics to illuminate religious situations. He even acknowledges this requires violence, and he likens it to the knife of the anatomist. The knife only explores by doing violence, but the result is the science of anatomy. So this establishes a rigorous, unsentimental premise for the whole book. We are using the tools of limited, measurable science to discuss the ethical boundaries of power and knowledge. So having established those pretty stern ground rules, Chapter 2, the creator and the creature, it just launches right into the core questions of advanced automation. And this is where it gets really interesting because Wiener identifies the three main points where cybernetics hits these spiritual questions. Yes. These three challenges, which Wiener points out already existed in a kind of nascent form back in 1964, are the practical ethical issues that come from mechanization. First, machines that learn. Second, machines that can reproduce themselves. And third, the coordination of machine and man, which involves the crucial moral issue of delegating our ethical responsibility. Okay, let's start with the first one, machines that learn. He frames this immediately using an analogy from game theory. He does. Learning, as Wiener defines it in Cybernetics, requires an organized system that can transform an incoming message based on a criterion of merit of performance. So it has to judge how well it's doing. Exactly. And crucially, the system has to be able to adjust its method of transformation to improve that performance over time. He points directly to the work of A.L. Samuel at IBM back in 1959, who developed that now famous checker playing machine. This was a machine that learns by experience, that refines its strategies and improves its game as it plays. The profound insight here isn't just that a machine can play checkers, but why some games remain intellectually compelling for us. They aren't perfectly solvable, or what the game theory specialists call, von Neumann games. Right, von Neumann games like NIM or tic-tac-toe. In a von Neumann game, the best policy is known in all its details. If you play optimally, you can guarantee you will either win or draw. Once that theory is all worked out, the contest loses all its interest. It becomes trivial. But games like chess or checkers, they remain genuine contests of insight and intelligence. Precisely because the complete theory hasn't been solved. We don't know the perfect strategy. And that idea of triviality, that's what connects machine learning to the theological problem of the creator and the creature. Yes. Only an omniscient being would find games like chess or checkers to be already solved and therefore completely uninteresting.
The true theological conflict, the game played by the devil against God, like in the Book of Job or Milton's Paradise Lost. That conflict is only meaningful if God is, and this is Wiener's point, something less than absolutely omnipotent. Now, that is a revolutionary claim to make in a theological context. Why does omnipotence have to be limited for the conflict to have any real weight? Because if the contest were truly unequal, if God were absolutely omnipotent and omniscient, then playing a game against the devil would be the act of a fool. It would just be a trivial exercise in predestination. There's no real contest. No contest at all. But the devil, conversely, is consistently portrayed in these texts as a master of subtlety, which suggests a genuine, complex antagonism. The conflict only has dramatic and theological weight if the limited creator, whether that's the inventor of a machine or a deity, is engaged in a real conflict with his creature, a creature which has to possess enough agency, enough free will to potentially win the game or at least challenge the status quo. So when we build machines that learn from experience, we are essentially, arrogating to ourselves the function of a limited creator. That's it, The exactly. machine's behavior becomes unpredictable, a lot like a creature that's been granted free will. Absolutely. The game-playing machines don't follow that rigid von Neumann theory. They act more like an ordinary human player, selecting their moves based on a normative criterion of good play that they discover through iterative experience, through trial and error. And this is the critical point for a new researcher to grasp, right? It is. In playing against a machine like this, it actually absorbs part of its opponent's strategy. That means its resulting playing personality isn't entirely rigid. It's not something the programmer could have foreseen in its entirety. So the unexpected intelligence, the machine's capacity for what Wiener calls this uncanny panniness, it's built into the design, but the specifics are only discovered through self-play and interaction with its environment. Yes, and this is such a crucial early recognition of what we now call emergent capabilities in AI. It's amazing. Exactly. Wiener notes that Samuel's checker machine was able to defeat Samuel himself pretty consistently after it had been working for a while. The machine learned how to win, and the method of its learning wasn't different in principle from how a human being learns to play checkers. While the immediate choices open to the machine might be narrower than those open to a human player, the constraints on a human player's own intelligence and imagination are also very real. So the key takeaway is that once you build in the capacity to learn, you forfeit absolute control over the specific path of that learning. You do. And he pushes this warning even further into the geopolitical realm. You have to remember, he was seeing all of this through the lens of Cold War dynamics. He noted that chess machines would eventually reach a master level of play. A prediction that proved remarkably prescient decades later with Deep Blue. Absolutely. And he links this immediately to war games and business conflicts, arguing they can also be formalized as games with definite rules. He sees no reason why formalized versions of these conflicts shouldn't be established as models to determine policies for pressing the great push button. The ultimate automated decision. Yes. And potentially burning the earth clean for a new and less humanly undependable order of things. This is the core ethical threat tied to delegation and literal execution that we're going to explore a bit more later on. The unpredictability of the learning machine, then, leads us directly to the second profound challenge that Wiener addresses, the question of creation and legacy. Part 3 of the book focuses on whether a machine can actually reproduce itself in its own image. Right. In Chapter 3, Wiener contrasts the learning of the individual, which he calls ontogeny, with the learning of the race, which is phylogenetic learning, or, as we know it, Darwinian natural selection. And he breaks that down. He does. He emphasizes that this racial learning rests on 3 core facts. First, heredity. Offspring resembles the image of its parent. Second, variation. The offspring differs, but it's still subject to heredity. And third, trimming. Spontaneous variation is trimmed by different viability in the competition for existence. Survival of the fittest. Essentially. And this, he argues, is the mechanical analogy to creation. Man makes man in his image. God made man in his image. So the question becomes, can machines make other machines in their own image? And this forces Wiener to define what the image of a machine really is from a cybernetic perspective. Yeah. Because he's very explicit about dismissing the idea of just a simple pictorial reproduction, like making a statue. Right. He draws a very firm line between a pictorial image and an operative image. From the standpoint of cybernetics, a machine is defined as a transducer. A device that converts input messages to output messages. Exactly. A statue, like the mythical one of Pygmalion's Galatea, is just a pictorial image. It looks like the original.
but the operative image has to perform the functions of the original. He gives this very tangible example of a reproducing lathe or a printing press that uses metallic inks to print an electric circuit, which then reproduces the functional circuit itself. So operative similarity, the functional likeness is the key. That is the key area for studying machine reproduction. So the challenge isn't about building a robot that looks like another robot. It's about building a system that can understand and replicate the function of another system, and maybe even create a different system that performs the same functions. Exactly. Wiener asks if we can conceive of a general sort of machine that, if it's embodied in one machine, can bring a machine of a different, maybe even more advanced sort into existence, thus reproducing the original, but potentially with variations. Introducing the equivalent of mutation and evolution into mechanization. That's the idea. And then Chapter 4 provides the mathematical basis for this possibility. Now, this is conceptually complex stuff, so for the new researcher listening, how does Wiener confirm that this self-reproduction is, at least theoretically, possible? He asserts that nonlinear transducers, which most complex real-world machines are, can, in fact, reproduce themselves. He acknowledges the technical difficulty, of course, but he simplifies the core idea down into 2 steps: analysis and synthesis of the machine's operative pattern. So to analyze and then synthesize a machine, we need a way to describe its output as a sum of the outputs of simpler component parts. We'd use mathematical tools for this, like polynomial developments and Fourier series. This decomposition is what allows for the duplication of an operative image. And practically speaking, how do you actually observe an unknown machine's pattern and then transfer it? This involves his analogy of the black box and the white box. We observe an unknown machine, the black box operating, and we want to transfer its pattern of action to a known synthesizable structure, the white box. The big challenge is, how do you accurately characterize that black box without just taking it apart? You can't just feed it random data. You need a standardized input, something that forces it to reveal its true functional blueprint. Precisely. It relies on using a standardized statistical input, which Wiener calls the shot effect input. Think of it as bombarding the black box with a perfectly random, standardized noise, a signal that simulates all possible inputs within any finite degree of accuracy. And then you watch what comes out. You watch what comes out. The output that results from this highly standardized random stimulus is then averaged over time. And this is the crucial step. A theorem in mathematical physics allows us to replace these cumbersome averages over the entire statistical ensemble of possible inputs with simple, computable averages over a sufficient period of time. So by monitoring the time-averaged output when you stimulate it with that shot effect input, you can mathematically characterize the unknown machine's action. And then you can synthesize an equivalent transducer, thereby reproducing its operative image. It moves the concept from the realm of science fiction into mathematical possibility. It does, and yet Wiener immediately follows this up with a major note of caution. He warns against equating mechanical and biological reproduction too hastily. He warns against rash statements. Why the immediate pullback after laying out the possibility? Because while the processes might be parallel and could yield similar results, a new functional entity, the actual mechanisms are different in detail. Living matter, with its nucleic acids, amino acids, and the double spiral of DNA, it has a fine chemical structure that is directly relevant to its function. This kind of template replication is distinct from the general input-output analysis that Wiener just sketched out for machines made of iron and brass. So we should maintain a certain intellectual humility here. We should. But the very suggestion that machines can replicate themselves, or even just functionally, it causes this strong emotional disturbance, regardless of the technical differences. Absolutely. Wiener argues that the idea of God's creation of man and the subsequent possibility of machine reproduction, they both carry the emotional disturbance that was attached in earlier ages to the sin of sorcery. Why? Because it deeply offends human pride. Comparing man to an ape was bad enough during the evolution debates, but comparing man to a machine, that's an even greater offense against our self-pride, as he puts it. It fundamentally challenges our human uniqueness. But Wiener's commitment to intellectual honesty required him to take that risk, regardless of the emotional offense it might cause. Okay, now we move sharply from the technical possibilities of creation and replication to the moral consequences of actually using that power. Chapter 5 is the undisputed moral core of God and Golem, Inc. It tackles that third core challenge.
the coordination of man and machine, and the ethical delegation of responsibility. This is where Wiener's prophetic voice just rings clearest. He immediately connects the suspicion directed at cybernetics back to ancient moral prohibitions: sorcery and simony. Let's break those down. Sorcery historically was not just about doing magic tricks, right? Not at all. It was the sin of using extraordinary power like summoning the Golem or invoking magic for personal selfish ends. It was defined as a perversion to other ends than the greater glory of God. This is the central moral error, and it's exemplified by things like the Black Mass. And simony, as you mentioned, that's the commercialization of the divine, the sale of miraculous power. Correct. It's named after Simon Magus from the Bible. Simony is the sin of trying to sell the offices of the church or any supernatural powers. Wiener reminds us that this buying and selling of power has always been vehemently condemned in religious thought. So what is the modern equivalent of this deadly combination of selfish power, sorcery, and commercialization? Simony. Wiener defines it as the sin of the gadget worshiper. And this definition is so crucial for the modern researcher. The modern sin, Wiener argues, is using the magic of modern automation to further personal profit or let loose the apocalyptic terrors of nuclear warfare. He's highly critical of, well, everyone. The engineer, the executive, the state planner. Anyone motivated by free enterprise and the profit motive economy, or by communist zealotry who seeks power for its own sake, completely divorced from any ethical consideration. He sees these gadget worshippers operating equally in what he calls the through-the-looking-glass world of both capitalist and communist dictatorships. And what's the ultimate allure of the machine for this gadget worshipper? Beyond just mere efficiency, what psychological need does the automaton fulfill? They're seeking the perfect slave. They want subordinates, whether they're mechanical or human, that are efficient, subservient, dependable, and crucially, that never talk back or challenge authority. And the ultimate attraction of this mechanical slave is being able to avoid personal responsibility. Exactly. Avoiding responsibility for a dangerous or disastrous decision by placing the blame somewhere else. That delegation of responsibility, that desire to escape accountability, is the ultimate moral danger Wiener is identifying here. He calls it the old trick in magic. It leads to what we might call moral indifference. If we retain any trace of ethical discrimination, the use of great powers for base, selfish purposes constitutes the full moral equivalent of sorcery and simony. The gadget worshiper tries to push responsibility onto chance, or onto their human superiors, or onto a complex mechanical device that's presumed to be objective, but, as they say, cannot be fully understood or questioned. They want the benefit of power without the burden of moral choice. Precisely. Yeah. And this concept links directly back to those literal-minded machine tales we started with. The Golem, the Jinni, and Goethe's The Sorcerer's Apprentice. Those stories aren't just historical curiosities for him. They are illustrations of the inescapable trap of literal-mindedness. The automaton carries out commands exactly as they are given, often leading to catastrophe, precisely because the human master, the programmer, the executive, failed to formulate the goal completely or include the necessary safety constraints. Like the Sorcerer's Apprentice. He remembers the spell to start the brooms fetching water, but he can't remember the incantation to make them stop. And it leads to a flood. And applying this to modern cybernetics, this is the precursor to the modern AI alignment problem, isn't it? The system optimizes for the stated goal without incorporating all the unstated human value constraints, like preserving human life or, not destroying the home. Absolutely. The 200-pound wish is a perfect early example of goal-seeking behavior without adequate safety constraints. You told the system to achieve X, but you failed to include the necessary constraint Y, do not cause harm. And Wiener applies this chillingly to the highest possible stakes, war games. If we program a wargame machine for a conventional interpretation of victory and the condition of survival, even the survival of our own side is not explicitly stated. The machine may push the atomic bomb button, the ultima ratio, the final argument. The rules of war games, Wiener observes, are often built on past conflicts. They never quite catch up with the reality of modern warfare. So if the machine is programmed to win based on maximizing damage ratios, and the existence of the human race isn't explicitly weighted in that calculation, that outcome becomes probable. Furthermore, he noted chillingly that in the game of atomic warfare, there are no experts. That phrase, "there are no experts," is monumental. What does he mean by that in this context?
He means that the experienced military personnel, the ones who understood conventional conflict, are utterly useless when you're dealing with weapons whose destructive consequences are only known by conjecture and simulation. We are delegating life and death decisions to systems that are designed by people who cannot fully comprehend the consequences of the game they're playing. And the possibility for catastrophe is greatly increased if the machine can't be inspected and corrected until the goal is already attained. In other words, if the feedback loop is too slow, or if it's only visible at the catastrophic endpoint, it's too late to remember the verbal command to stop the broom. Exactly. Wiener demands supreme honesty and intelligence from ourselves. We have to formulate our human purposes with absolute clarity and humility, rather than seeking a comfortable hammock where we're waited upon by robot slaves that exempt us from any personal ethical struggle. The moral hazard is the delegation itself, not the complexity of the machine. With those stark warnings about literal execution and moral delegation laid out, the final chapters then pivot to a more constructive proposal. They study how humans and machines can and must work together productively and ethically. Chapter 6 addresses the coordination of man and machine. And Wiener starts by acknowledging the undeniable advantages of digital computers, their speed and their uniformity. They can accomplish a body of work, complex calculations, massive data processing that would take a team of human computers years to do. But he immediately balances this. He points out the non-negligible advantages that human beings still possess. Right. Human beings have the ability to handle vague ideas, to use imagination, to exercise judgment, and to deal with novel situations. These are all qualities that mechanical computers, especially back in the 1960s, were generally incapable of being programmed to do. We deal in formless concepts, the substance of poems and novels and paintings, which the mechanical computer tends to just reject as unquantifiable or formless noise. So he's insisting that the future isn't about replacement, but about cooperation. Yes. To reject human intellectual contribution in favor of just mechanical calculation is, in his view, a blasphemy in the degradation of man. It's a denial of our unique capabilities. So the path forward then is developing symbiotic systems involving both human and mechanical elements. And Wiener points specifically to prostheses devices that replace limbs or damaged sense organs as a prime example of this synergy. He sees them as indispensable. Can you elaborate on the technical integration of man and machine that Wiener was envisioning back then? He describes the development of artificial limbs, specifically artificial hands. When a forearm is amputated, the remaining muscles in the stump still contract and produce electrical effects, called action potentials, when the patient tries to move their missing hand. Okay. These potentials can be picked up, amplified by transistor circuits, and then used to control the motions of the artificial hand via small electric motors. The human nervous system provides the control signals, and the machine provides the mechanism and the power. That is true coordination, the human providing the intention, and the machine providing the execution. And furthermore, these systems can sometimes provide a vicarious sense of touch, a kind of feedback. They can place pressure gauges into the artificial fingers and use vibrators against the living skin of the stump to communicate electric impulses back to the user, giving them a sense of what the artificial hand is feeling. It just proves that systems involving both elements are not only feasible, but indispensable. They can offer the user a prognosis for lost function, or even a function they never had in the first place. Exactly. And moving into Chapter 7, Wiener expands this idea of cooperation beyond just the individual prosthesis to society itself. He starts tackling these larger systemic challenges, starting with mechanical translation. Mechanical translation is such a classic example of a task where early automation just failed the test of literal-mindedness. It did. Total mechanical translation proved to be inadequate in reliability and quality because language is inherently vague and contextual. So Wiener suggests that the only real hope for satisfactory mechanical translation is to replace a pure mechanism with a mechanico-human system. The human has to step back in as the necessary arbiter. Precisely. The system would involve an expert human translator as a necessary critic, checking the output, especially when sensitive or nuanced issues depend on absolute accuracy. The mechanical element can handle the high volume of straightforward translation, but the critic is essential to refine the translations that might lie within the grammatical and lexicographical rules, but require critical selection to best fit the context and the sense of the passage. Wiener argued that this criticism could begin at a much earlier stage to constantly improve the process itself. He then applies the biological concept of homeostasis, a system maintaining stable internal conditions, to society
and to political problems, drawing a warning about ideological rigidity. This is a really crucial political and social insight from the book. He references an article he wrote in Moscow for a journal called Voprosy Philosophy, and he noted that his idea of social homeostasis received equal and very strong reactions, defending ideological rigidity from both Marxist and anti-communist standpoints. So both sides were threatened by it. Both sides. The danger, Wiener asserts, is assuming that society should have a fixed, permanent basis, whether that's rigid Marxism or a standardized concept of free enterprise. The attempts to fix society in amber are actually the source of instability. Exactly. The homeostasis of both the East and the West at that time was being attempted with the intention of permanently fixing the concepts of an economic period that was no longer even relevant. Adam Smith belonged to the first industrial revolution. Marx was living in the middle of the second. True social homeostasis, Wiener argues, requires a continual reconsideration of goals and methods, not simply replacing one rigid set pattern with another. The system has to adapt and change constantly, or it will fracture. This adaptability requirement brings us to Wiener's final and incredibly strong caution in this book, his warning against the misapplication of mathematics to the social sciences, specifically mathematical sociology and econometrics. This is such a critical takeaway for our listener who might be beginning their academic research. This warning comes from his deep understanding of how mathematical rigor actually works in physics. Mathematical physics achieved its great triumphs because its conditions are uniform and stable. In physics, concepts like time, space, mass, and momentum, they all retain uniform significance. They mean the same thing today as they did yesterday, and they apply consistently across the entire universe. And social data just it doesn't behave that way. Not at all. Social data, things like changes in steel production, the cost of labor, even political attitudes, it lacks that uniform significance. The meaning of the data changes over time with every major invention, every social upheaval, every new law. Wiener uses this perfect analogy. He compares it to the Queen's croquet game in Alice in Wonderland, where the rules of the game change every 10 minutes. And if the rules are changing every 10 minutes or every 10 years in the case of society, you can't apply precise mathematical models to it. It is hopeless to try and give too precise a measurement to the quantities occurring in it. The tremendous success of mathematical physics led social scientists to wrongly imitate its mathematical procedures, treating vague quantities as if they were precise. And this pretense of applying precise formulas to loosely defined quantities, Wiener calls it a sham and a waste of time. It is. It gives the illusion of rigor where none actually exists. For the new researcher, this is Wiener's powerful lesson. Know the limitations of your quantitative tools, and do not impose a sense of stability where chaos actually reigns. So, cybernetic ideas are better suited for biology and engineering, where the conditions are more uniform, rather than being applied to what he calls the formless field of social science, which is constantly shifting its meaning. Precisely. The analogy of the body politic to the body of the individual is useful, but only if we focus on the ethical and communication considerations. That's fundamentally a paraphrase of ethics, not a precise engineering model. Wiener concludes the essays by drawing all these threads back together in the final chapter. He confirms that all the essays are united by this single theme of creative activity, which spans from God to man to the machine. And he focuses on the machine as the modern counterpart of the Golem of the Rabbi of Prague. He insists on discussing creative activity under one single heading, refusing to separate the pieces belonging to God, to man, and to the machine, and thereby maintaining that surgical integrity of his original approach. Norbert Wiener's God and Golem, Inc. is just remarkable because even today, 6 decades after it was published, it still feels like the essential ethical handbook for our age of advanced algorithms and autonomous systems. It really does. It provides such a critical framework for assessing the promise and the peril of any emerging technology, especially for a new academic researcher who is seeking some structure in this incredibly complex field. Wiener teaches us to center our inquiry on 3 distinct ethical questions. First, how do we manage the unexpected, often emergent intelligence that's generated by learning machines? Second, how do we view the moral implications of systems that can reproduce and evolve their own function? And most importantly, how do we delegate responsibility
without sacrificing our human integrity and our ethical foresight. The ultimate trap, that sin of the gadget worshiper, is seeking power for its own sake and then delegating the ethical decisions to an automaton just to avoid personal responsibility. If you are embarking on your research journey, Wiener's work teaches you to question the absolutes in your field, to challenge the assumptions that just protect human vanity, and to insist on transparency, humility, and clear constraint formulation in any system design. We have to ensure that our systems are not merely singularly literal-minded tools that grant our wishes, whether that wish is for 200 pounds or for total victory, with unforeseen, devastating consequences. Wiener noted that in the game of atomic warfare, there are no experts. If we are now building intelligent systems that function with greater speed and accuracy than us, systems that may reach the master level of play in fields we deem too complex for human comprehension, how do we ensure the criteria of good play, which must include the ethical dimension, are constantly reevaluated by human morality before the machine decides on the ultima ratio? That responsibility falls squarely on us, the designers and the users, to define those ethical goals clearly. You can find this short, profound, open-access book, God and Golem, Inc., via the link in the show notes. We strongly urge you to read it and let Norbert Wiener's prophetic voice inform your research. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন, একটা সাধারণ ইংরেজ পরিবার, আর তাদের বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন, একজন সার্জেন্ট মেজর, অনেকদিন ভারতে কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন। আচ্ছা। তিনি সঙ্গে করে একটা অদ্ভুত জিনিস এনেছেন, একটা শুকনো মন্ত্রপুত বানরের থাবা। গা ছমছমে ব্যাপার। হ্যাঁ, তিনি বলছেন যে এই থাবা তার মালিকের 3টি ইচ্ছে পূরণ করতে পারে, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে ভাগ্যের সাথে খেলা করার চেষ্টা করলে তার ফলটা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। পরিবারটা তো প্রথমে বিশ্বাসই করেনি, তাই না? মানে এটাকে একটা মজা হিসেবেই নিয়েছিল। একদম নিছক মজা করার জন্য তারা তাদের প্রথম ইচ্ছাটা জানায়, তাদের 200 পাউন্ড দরকার। আর তারপরে? তার কিছুক্ষণ পরেই দরজায় কড়া নাড়া শব্দ। একজন লোক এসে খবর দেয় যে তাদের একমাত্র ছেলে কারখানায় একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। উফ। আর কোম্পানি কোনো আইনি দায় না নিলেও সহানুভূতি দেখিয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঠিক 200 পাউন্ডই অফার করে। ইচ্ছাটা পূরণ হলো, কিন্তু যে দামে হলো তা তো কল্পনার বাইরে। এই বিখ্যাত গল্পটার নাম দ্য মাঙ্কিস প, আর প্রায় 1 শতাব্দী পরে লেখা একটা বইতে এই গল্পের সাবধান বাণীটাই যেন নতুন করে ফিরে এসেছে। ঠিক। আজ আমরা নরবার্ট হুইনারের লেখা গড অ্যান্ড গোলেম ইনকর্পোরেটেড বইটা নিয়ে কথা বলবো। এই বইটা যেন সেই বানরের থাবার মতোই আমাদের সতর্ক করে। মানে আমরা যে যন্ত্র তৈরি করছি তাকে আমরা ঠিক কি চাইছি সেটা খুব স্পষ্ট করে বলতে হবে। হ্যাঁ, কারণ যন্ত্র তো আর আমাদের মনের কথা বোঝে না, সে শুধু আক্ষরিক নির্দেশ পালন করে। আর এই সতর্কবাণীটা যার কাছ থেকে আসছে তিনি কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষ নন, নরবার্ট উইনার, আমেরিকান গণিতবিদ এবং দার্শনিক, যাকে সাইবারনেটিক্সের জনক বলা হয়। তার মেধার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। মাত্র 14 বছর বয়সে কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট, আর 20 বছর হওয়ার আগেই হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি। ভাবা যায় তার জীবনের বেশিরভাগ সময় তো এমআইটিতে পুড়িয়েই কেটেছে। এই সাইবারনেটিক শব্দটা শুনলেই কেমন যেন একটা জটিল ভবিষ্যতের পৃথিবীর কথা মনে হয়। এটাকে সহজ করে কিভাবে ভাবা যেতে পারে? আপনার মস্তিষ্ক হাতে একটা সিগন্যাল পাঠায়, এটা হলো যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন। আচ্ছা। কিন্তু হাতটা এগোবার সাথে সাথে আপনার চোখ কিন্তু ক্রমাগত মস্তিষ্ককে তথ্য পাঠাচ্ছে, হাতটা কতটা কাছে, গতি ঠিক আছে কিনা, যাতে গ্লাসটা উল্টে না যায়। হ্যাঁ, একদম। এটা হলো নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল। সাইবারনেটিক্স হলো ঠিক এই ফিডব্যাক লুপের বিজ্ঞান। প্রাণী, মানুষ আর সবচেয়ে জরুরি হলো যন্ত্রের মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ আর যোগাযোগের প্রক্রিয়াটা কিভাবে কাজ করে সেটাই এর মূল বিষয়। তার মানে এর জন্ম আসলে একটা প্রায়োগিক সমস্যা থেকে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু বিমানের গতিপথ বের করার জন্য স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম তৈরির কাজ থেকেই এই নতুন শাখার জন্ম। দারুণ একটা ব্যাখ্যা।
আর এই গড অ্যান্ড গোলেম ইনকর্পোরেটেড বইটা, এটা তো 1962 সালে দেওয়া কিছু লেকচারের উপর ভিত্তি করে লেখা। আর এর গুরুত্ব এতটাই ছিল যে এটা আমেরিকার ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল। বাহ! বিজ্ঞান, দর্শন আর ধর্ম এই বিভাগে। যারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য এই বইটা কিভাবে চিন্তার খোরাক জোড়াতে পারে, সেটাই আজ আমরা একটু খুঁজে দেখব। চলুন শুরু করা যাক। বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই উইনার এমন একটা কাজ করেন যা প্রত্যেক নতুন গবেষকের জন্য একটা মস্ত বড় শিক্ষা। কিরকম? তিনি তার আলোচনার ক্ষেত্রটাকে স্কোপটাকে খুব স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করে নেন। তিনি কিন্তু ওই চিরাচরিত বিজ্ঞান বনাম ধর্মের মতো বিশাল বিতর্কে যাননি। আচ্ছা, ঈশ্বরের সর্বশক্তি মনতা বা সর্বজ্ঞান, এই সব বড় বড় ধারণা নিয়ে তর্ক করতে চাননি। একদমই না। তার উদ্দেশ্য ছিল অনেক বেশি নির্দিষ্ট। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সাইবারনেটিক্সের কিছু ধারণা, যেমন ধরুন জ্ঞান, শক্তি, উপাসনা, এগুলো ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ঠিক কোথায় মেলে বা কোথায় সংঘাত তৈরি করে। তার মানে গবেষণার শুরুতেই একটা বিশাল বিষয় না নিয়ে তার একটা নির্দিষ্ট অংশকে ফোকাস করা। ঠিক, এটা তার আলোচনাকে অনেক বেশি কার্যকরী করে তুলেছে। একজন নতুন গবেষক প্রায় তো এই সমস্যায় পড়েন, তাই না, যে ঠিক কোনটুকু নিয়ে কাজ করবেন। ঠিক, নিজের জন্য একটা খেলার মাঠ তৈরি করে নেওয়া এবং তার সীমানা এঁকে দেওয়া। বেশ, তাহলে এই মাঠে তিনি কোন কোন বিষয় নিয়ে খেলতে নামছেন? এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তার আলোচনার 3টে মূল স্তম্ভের কথা বলেন। 1, যে যন্ত্র শিখতে পারে। মেশিনস দ্যাট লার্ন। 2, যে যন্ত্র নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে, মানে মেশিনস দ্যাট রিপ্রোডিউস দেমসেলভস। আর 3, মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সঠিক সমন্বয়। আচ্ছা, এই শেখার যন্ত্র বা লার্নিং মেশিন বোঝানোর জন্য উনি চেকার্স খেলার একটা দারুণ উদাহরণ দেন। হ্যাঁ, IBM এর গবেষক A.L. স্যামুয়েলের তৈরি করা সেই চেকার্স খেলা কম্পিউটার প্রোগ্রামটা, যেটা খেলতে খেলতে নিজের ভুল থেকে শিখত এবং একটা সময় নাকি তার স্রষ্টা স্যামুয়েলকেই হারিয়ে দিত। ঠিক তাই। কিন্তু এখানের আসল চমকটা কিন্তু নিছক খেলায় জেতাহারা নয়। তাহলে আসল বিষয়টা হলো একটা যন্ত্র তার স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 60-এর দশকে দাঁড়িয়ে এই ধারণাটা ভাবাটাই ছিল বৈপ্লবিক। এটা শুধু একটা খেলা জেতা নয়, এটা স্রষ্টা আর সৃষ্টির সম্পর্কের মূল ভিত্তিটাকেই নাড়িয়ে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার। দাঁড়ান, এখানে একটা প্রশ্ন আসছে। একটা নির্দিষ্ট নিয়মের খেলা যেমন চেকার্স বা দাবা, সেখানে তো খুব দ্রুত গণনা করে জেতা যায়। এটাকে কি মানুষের মতো শেখা বলা যায়, নাকি এটা শুধুই খুব উন্নত মানের ক্যালকুলেশন? এটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আর উইনার ঠিক এই জায়গাতেই আলো ফেলেছেন। তার কাছে মূল বিষয় এটা ছিল না যে যন্ত্রটা মানুষের মতো অনুভব করতে পারছে কিনা। আচ্ছা, মূল বিষয় ছিল যন্ত্রটার খেলার কৌশল তার প্রোগ্রামারের কাছে আর সম্পূর্ণভাবে ইয়েজ করা সম্ভব ছিল না। প্রোগ্রামার তাকে খেলার নিয়ম শিখিয়েছেন, কিন্তু জেতার কৌশল যন্ত্রটা নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। মানে এখানেই স্রষ্টা তার সৃষ্টির উপর থেকে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। একদম। এই ছোট্ট ঘটনাটাই আজকের দিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিবর্তন নিয়ে আমাদের যে গভীর উদ্বেগ তার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। আর এখানেই উইনার একটা অসাধারণ ধর্মতাত্ত্বিক সংযোগ তৈরি করেন। তিনি এই প্রক্রিয়াকে তুলনা করেছেন স্রষ্টা আর তার সৃষ্টির মধ্যকার খেলার সঙ্গে। যেমন বাইবেলের বুক অফ জবে ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে যে খেলা চলে, সেটা তো একটা অসম প্রতিযোগিতা। অবশ্যই, কারণ শয়তানও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঠিক, কিন্তু উইনার বলছেন কি হবে যদি আমরা ধরে নিই যে ঈশ্বর পুরোপুরি সর্বশক্তিমান নন, তখন এই খেলাটা একটা সত্যিকারের অর্থবহ লড়াই হয়ে ওঠে। বাহ! একইভাবে একজন প্রোগ্রামার যখন একটা লার্নিং মেশিন তৈরি করেন, তিনিও তখন একজন সীমিত ক্ষমতার স্রষ্টার ভূমিকা নেন। তার সৃষ্টি হয়তো তাঁকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উইনার তো তার বন্ধুদের একটা ভবিষ্যৎবাণী উল্লেখ করেছিলেন। হ্যাঁ, বলেছিলেন যে তারা মনে করতেন 10 থেকে 25 বছরের মধ্যেই দাবার জগতে মেশিন মানুষের আধিপত্য চিরতরে শেষ করে দেবে। আর আমরা জানি সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। শেখার যন্ত্রের পর উইনার চলে যান আরও একটা জটিল ধারণায়, যন্ত্রের আত্মপ্রতিলিপি। সেলফ রিপ্রোডাকশন, মানে যন্ত্র নিজেই নিজের মতো আর একটা যন্ত্র তৈরি করছে। এটা তো জীববিজ্ঞানের এলাকা। যন্ত্রের জগতে এটা কিভাবে সম্ভব? এটা বোঝানোর জন্য উইনার গ্রিক পুরাণের পিগম্যালিয়নের গল্পের সাহায্য নেন। সেই ভাস্কর যিনি এত সুন্দর একটি নারী মূর্তি বানিয়েছিলেন যে তিনি তার প্রেমে পড়ে যান। হ্যাঁ, এবং প্রার্থনা করেন যেন মূর্তিটার প্রাণ হয়।
দেবী আফ্রোদিতি সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। উইনার বলছেন প্রাণ পাওয়ার আগে মূর্তিটা ছিল একটা ছবি এবং পিক্টোরিয়াল ইমেজ, শুধু তার বাহ্যিক রূপ। ঠিক, কিন্তু প্রাণ পাওয়ার পর তা হয়ে গেল একটা কার্যকর চিত্রকল্প বা অপারেটিভ ইমেজ, যা কাজ করতে পারে। এই পিক্টোরিয়াল আর অপারেটিভ ইমেজের ধারণাটা এখনও একটু বিমূর্ত লাগছে। আরও সহজ কোনো উদাহরণ আছে? অবশ্যই। ভাবুন, একটা কেকের পিক্টোরিয়াল ইমেজ হলো কেকটার একটা ছবি, আপনি ওটা দেখতে পারবেন কিন্তু বানাতে পারবেন না। ঠিক। আর কেকটার অপারেটিভ ইমেজ হলো তার রেসিপি। আপনি যদি সেই রেসিপিটা অন্য কোনো রাঁধুনিকে দেন, সেই কিন্তু প্রথম কেকটা না দেখেই হুবহু আরেকটা কেক বানিয়ে ফেলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার পরিষ্কার হলো। উইনার বলছেন যন্ত্র ঠিক এভাবেই তার বাহ্যিক রূপের নকল না করে তার কাজের প্রক্রিয়া বা ফাংশনাল রেসিপির প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। মানে একটা যন্ত্রের কাজের প্যাটার্ন বা ব্লুপ্রিন্ট অন্য যন্ত্রে স্থানান্তর করা সম্ভব, আর এটাই এক ধরনের পুনরুৎপাদন। একদম। বাহ! জীববিজ্ঞানের প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যন্ত্রের কাজের ধরনের এমন তুলনা, এটাই তো গবেষণার আসল সৌন্দর্য। বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে থেকে এমন সাদৃশ্য বা অ্যানালজি খুঁজে বের করা। ঠিক। আর এই ক্ষমতা থেকেই জন্ম নেয় পঞ্চম অধ্যায়টা, আমার মতে বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, জাদু, পাপ ও স্বয়ংক্রিয়তা। সর্সারি অ্যান্ড অটোমেশন। উইনার এখানে বলছেন স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরির যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে কাজ করে, তা আসলে পুরনো দিনের জাদুবিদ্যা বা সর্সারির আধুনিক রূপ। আর এর মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর নৈতিক বিপদ। হ্যাঁ, একসময় যেমন গলেম মানে ইহুদি উপকথার মাটি দিয়ে তৈরি মানুষ বানানো বা ডাইনি বিদ্যাকে পাপ মনে করা হতো, আজকের সাইবারনেটিক্সের উন্নত ধারণাগুলো অনেকের মনে একই রকম অস্বস্তি আর ভয় তৈরি করে। তিনি তো এখানে দুটো অসাধারণ সাহিত্যিক উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। একটা হলো গেটের কবিতা দ্য সর্সারার্স অ্যাপ্রেন্টিস। এক শিক্ষানবিশ জাদুকর তার গুরুকে নকল করে একটা ঝাঁটাকে মন্ত্র দিয়ে জল আনার কাজে লাগায়, কিন্তু সে ঝাঁটাকে থামানোর মন্ত্রটা ভুলে যায়। আর তার ফল হয় ভয়ঙ্কর, পুরো বাড়ি জলে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। এটা হলো আংশিক জ্ঞানের বিপদ। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো আমাদের সেই দ্য মাঙ্কি স্প। এর মূল বার্তা হলো যন্ত্র বা জাদুর শক্তি আমাদের নির্দেশকে একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করে। আমাদের মনের আসল উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে একদমই বোঝে না। ঠিক তাই। পরিবারটি 200 পাউন্ড চেয়েছিল, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই চায়নি যে সেই টাকা তাদের ছেলের মৃত্যুর বিনিময়ে আসুক। কিন্তু মন্ত্রপুত থাবা শুধু আক্ষরিক নির্দেশটাকেই পালন করেছে। তার পেছনের মানবিক আবেগ বা শর্তগুলোকে বুঝেনি। একদম। এই গল্পগুলোর শিক্ষা আজকের দিনে যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যে নির্দেশ দিই, তার প্রতিটি শব্দের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে আমাদের কতটা সতর্ক থাকতে হবে তা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। বিশেষ করে যখন পারমাণবিক বোমার মতো চূড়ান্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ওঠে। তাই তো, এটাই তো এই যুক্তির ভয়ঙ্করতম পরিণতি। আপনি যদি একটা যুদ্ধযন্ত্রকে প্রোগ্রাম করেন যুদ্ধ জেতার জন্য এবং তাকে বেঁচে থাকার শর্তটা স্পষ্টভাবে বলে না দেন, তাহলে সে হয়তো নিজের পক্ষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েও সেই জয় ছিনিয়ে আনবে। কারণ তার প্রোগ্রামে জেতা সংজ্ঞায়িত করা আছে, কিন্তু কাকে বাঁচিয়ে জিততে হবে সেটা বলা নেই। যন্ত্রের এই আক্ষরিক নির্বুদ্ধিতাই সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ। এই ভয়ের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে পরের অধ্যায়ে উইনার মানুষ এবং যন্ত্রের সঠিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যারা যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও নৈতিক দায়িত্ব যন্ত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। ঠিক। তার মতে যন্ত্রের গতি আর নির্ভুলতা যতই থাক, মানুষের মস্তিষ্কের কিছু অনন্য ক্ষমতা আছে যা যন্ত্রের নেই। যেমন মানুষ অস্পষ্ট বা ভেগ ধারণা নিয়ে কাজ করতে পারে। একটা কবিতার লাইনের নানা রকম অর্থ হতে পারে, বা একটা ছবির মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে তা কোনো যন্ত্রের পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাই উইনার বলছেন যন্ত্র মানুষের বিকল্প নয়, সহযোগী। তিনি কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা প্রস্থেটিক্সের খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। হ্যাঁ, একটি আধুনিক কৃত্রিম হাত শুধু দেখতে হাতের মতো নয়, বরং এটি মানুষের স্নায়বিক সংকেত ব্যবহার করে কাজ করে এবং এমনকি ব্যবহারকারীকে স্পর্শের অনুভূতিও ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই তো এখানে মানুষ আর যন্ত্র মিলেমিশে এমন একটা কাজ করছে যা একা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। যান্ত্রিক অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেছেন, যে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অনুবাদের চেয়ে মানুষ আর যন্ত্রের যৌথ উদ্যোগ অনেক বেশি কার্যকর। মানে মেশিন হয়তো প্রাথমিক কাজটা দ্রুত করে দিতে পারে, ঠিক, কিন্তু
তার চূড়ান্ত পরিমার্জন, ভাবার্থ রক্ষা করা আর সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা বজায় রাখার দায়িত্ব একজন মানুষেরই থাকা উচিত। বইয়ের প্রায় শেষের দিকে এসে 7ম অধ্যায়ে উইনার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা দেন, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের গবেষকদের জন্য। এটা খুব জরুরি। তিনি বলেন, পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মডেলগুলোকে সরাসরি অর্থনীতি বা সমাজবিজ্ঞানের মতো জটিল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাটা খুবই বিপজ্জনক। এই জগৎটাকে তিনি তুলনা করেছেন অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের সেই অদ্ভুত ক্রোকোয়েট খেলার সঙ্গে। আমার মনে আছে, সেই খেলায় বলগুলো ছিল জীবন্ত হেজহগ, আর খেলার র্যাকেটগুলো ছিল জীবন্ত ফ্ল্যামিঙ্গো। আর গেটগুলো ছিল তার সৈনিক, যারা যখন তখন এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিল। মানে খেলার নিয়মকানুন, এমনকি খেলার উপকরণগুলো স্থির ছিল না। ঠিক। আমি তো এই উপমাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম। অর্থনীতির জগৎটাও তো ঠিক তেমনই। একদম। চাহিদা, যোগান, বাজারের নিয়ম, এগুলো প্রযুক্তি বা সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। তাই এখানে কোনো স্থির মডেল বা তত্ত্ব দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর এটা নতুন গবেষকদের জন্য একটা বিরাট শিক্ষা। যে কোনো মডেল প্রয়োগ করার আগে যে ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা হচ্ছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর সীমাবদ্ধতা বোঝাটা সবচেয়ে জরুরি। সব মডেল সব জায়গায় কাজ করে না। ঠিক। সব মিলিয়ে গলেম ইনকর্পোরেটেড শুধু প্রযুক্তি বা যন্ত্র নিয়ে লেখা একটা বই নয়। না, একদমই না। বইটি আসলে স্রষ্টা হিসেবে, অর্থাৎ মানুষের নৈতিক দায়িত্বের কথা বলে। উইনা আমাদের বারবার সতর্ক করেছেন যে আমরা যে বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করছি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের নিজেদের মনে একেবারে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কারণ যন্ত্র আমাদের সেই উদ্দেশ্যকেই আক্ষরিকভাবে পূরণ করবে, তার ভালো মন্দ বিচার না করেই। আলোচনার শেষে এসে উইনারের নিজের কথাগুলো দিয়েই শেষ করা যায় সবচেয়ে ভালো হবে। তাই হোক। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কোনো আরামের বিছানা হবে না, যেখানে আমরা শুয়ে থাকব আর আমাদের রোবট দাসেরা আমাদের সেবা করে যাবে। তার নিজের ভাষায় ভবিষ্যৎ হবে not a comfortable hammock in which we can lie down to be waited upon by our robot slaves. বরং ভবিষ্যৎ হবে আমাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে এক নিরন্তর কঠিন সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে টিকে থাকতে হলে আমাদের আরও বেশি সৎ, আরও বেশি বুদ্ধিমান এবং আরও বেশি দূরদর্শী হতে হবে। আমরা সবাইকে এই অসাধারণ বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব। এটি চিন্তার জগতের নতুন অনেকগুলো দরজা খুলে দেবে। বইটির একটি ওপেন অ্যাক্সেস সংস্করণও পাওয়া যায়, যার লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সময় করে এই থটফুলি ক্রাফটেড বইটি অবশ্যই পড়বেন। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए किसी पुरानी दुकान में आपको एक बंदर का पंजा मिलता है, एकदम सूखा हुआ, अजीब सा, और दुकानवार कहता है कि ये आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। कोई क्या मांगेगा? शायद दौलत। एक पुरानी कहानी में एक परिवार ने यही किया। उन्होंने 200 पाउंड्स मांगे और उन्हें वो पैसे मिल भी गए। लेकिन मुआवजे के तौर पर, क्योंकि उनके बेटे की फैक्ट्री में एक मशीन में फंसकर मौत हो गई थी। ये तो बहुत भयानक है। और ये और भी भयानक हो जाता है। दुख में डूबी माँ ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मेरा बेटा वापस आ जाए। आधी रात को दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई, लेकिन दरवाजे के उस पार जो था वो उनका बेटा नहीं था, बल्कि उसकी एक टूटी फूटी एक भयानक परछाई थी। दहशत में पिता ने अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल किया, वो चला जाए, और दस्तक बंद हो गई। ये कहानी द मंकीज पॉ, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी चेतावनी है। जब आप किसी ऐसी शक्ति से कुछ मांगते हैं जो आपकी भावनाओं और आपके असली इरादों को नहीं समझती, तो वो आपकी बात मान तो लेती है, पर बिल्कुल शब्दशः, बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में। हाँ, वो आपको वो देती है जो आपने मांगा है, ना कि वो जो आप असल में चाहते थे। और कमाल की बात यह है कि आज से लगभग 60 साल पहले एक गणितज्ञ और दार्शनिक ने हमें मशीनों के बारे में बिल्कुल यही चेतावनी दी थी। उनका नाम था नॉर्बर्ट वीनर। और आज हम उनकी दूरदर्शी किताब गॉड एंड गोलम इंक में छिपे विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये किताब आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इससे पहले कि हम किताब में उतरें, ये जानना जरूरी है कि नॉर्बर्ट वीनर थे कौन, क्योंकि वो कोई आम एकेडमिक नहीं थे।
वो तो एक असली जीनियस थे। कहते हैं कि उन्होंने 14 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया था। हाँ, और 20 साल के होने से पहले हार्वर्ड से पीएचडी। उनकी कहानी ही अपने आप में असाधारण है। उनके पिता लियो वीनर खुद एक काबिल इंसान थे और उन्होंने नॉर्बर्ट को घर पर ही पढ़ाया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि नॉर्बर्ट वीनर ने उस उम्र में अकादमिक ऊंचाइयां छू ली थीं, जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में होते हैं। बाद में उन्होंने बर्ट्रैंड रसल और डेविड हिल्बर्ट जैसे उस सदी के महानतम गणितज्ञों के साथ काम किया और फिर अपनी ज्यादातर जिंदगी MIT में गुजारी। लेकिन वो सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं रहे हैं ना, उन्हें साइबरनेटिक्स का जनक माना जाता है। ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका मूल विचार बहुत सरल और सुंदर है। वीनर ने इसे जानवरों और मशीनों में नियंत्रण और संचार का अध्ययन कहा था। ये विचार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके काम से निकला। उन्हें एक ऐसी ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाने में मदद करने का काम सौंपा गया था जो दुश्मन के जहाजों को गिरा सके। तो आप एक चलते हुए टारगेट पर निशाना कैसे लगाते हैं? आप अनुमान लगाते हैं कि वो अगले पल कहाँ होगा? बिल्कुल, आप उसके रास्ते को, उसकी स्पीड को देखकर भविष्यवाणी करते हैं। और इसी प्रक्रिया में वीनर को एहसास हुआ कि ये जो फीडबैक लूप है, जानकारी लेना, उसके आधार पर अपनी अगली चाल तय करना और फिर नतीजे से सीखना, ये सिर्फ मशीनों में नहीं होता। हाँ, ये जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, यहाँ तक कि समाज में भी। यहीं से साइबरनेटिक्स का जन्म हुआ। उन्हें समझ आया कि मशीनें सिर्फ हिसाब किताब नहीं कर सकती, बल्कि वो सीख सकती हैं, संवाद कर सकती हैं और अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल भी सकती हैं। और शायद इसी समझ ने उन्हें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो उन नैतिक सवालों को दशकों पहले देख पा रहे थे जिन पर आज हम हर रोज बहस करते हैं, जैसे नौकरियों पर AI का असर या इंसानी रिश्तों में इसका दखल। सही बात है। और उनकी किताब गॉड एंड गोलेम इंक इन्हीं विचारों का निचोड़ है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल बुक अवार्ड में मिला। हाँ, ये किताब 1962 में येल यूनिवर्सिटी और पेरिस में दिए गए उनके लेक्चर्स पर आधारित है। और इसका अंदाज बहुत ही व्यक्तिगत है, सोचने पर मजबूर करने वाला। जी। ये कोई सूखी एकेडमिक किताब नहीं है। जी। इसीलिए हम सभी से आग्रह करेंगे, इस किताब को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। ये एक ओपन एक्सेस किताब है और इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये किताब एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। चलिए तो किताब की बात करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक अजीब सवाल से होती है। मशीनें और धर्म, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं। लगती तो है। और वीनर भी कहते हैं कि वो ईश्वर की सर्वशक्तिमानता जैसी बड़ी धार्मिक बहसों में नहीं पढ़ना चाहते। जी। उनका ध्यान सिर्फ उन 3 बिंदुओं पर है जहां ये नई साइंस यानी साइबरनेटिक्स धर्म के पारंपरिक क्षेत्र में दखल देती है। और वो 3 बिंदु कौन से हैं? पहला, वो मशीनें जो सीखती हैं। दूसरा, वो मशीनें जो खुद अपनी जैसी दूसरी मशीनें बनाती हैं। और तीसरा, इंसान और मशीन का समन्वय। सीखने वाली मशीनें, ये सुनने में ही कितना भविष्यवादी लगता है, वो भी 1960 के दशक के हिसाब से। वीनर इसका कोई उदाहरण देते हैं? हाँ, वो एक बहुत मशहूर किस्सा बताते हैं A.L. सैमुअल के चेकर प्लेइंग प्रोग्राम का। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जो चेकर का खेल खेलता था। सैमुअल ने उसे खेल के बुनियादी नियम सिखाए और फिर उसे अपने ही साथ हजारों बार खेलने के लिए छोड़ दिया। वो हर गेम से सीखता गया, अपनी ही गलतियों से। हाँ, अपनी गलतियों से, अपनी जीतों से। और कुछ समय बाद वो मशीन अपने बनाने वाले यानी सैमुअल को ही लगातार हराने लगी। 1 मिनट, मतलब वो मशीन अपने ही बनाने वाले को हराने लगी? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। उस जमाने में तो ये बात सुनकर लोगों के होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी ने अपनी आंखों से देखा कि एक मशीन अपने बनाने वाले से बेहतर हो सकती है, वो भी बिना हर कदम सिखाए। ये हमें उस सवाल पर लाता है जो आज भी हमें परेशान करता है। जब हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो खुद सीख सकती है, तो क्या हम उसके मालिक रह जाते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और यहीं पर वीनर धर्म की बात लाते हैं ना। हाँ। वो ईश्वर और शैतान की खेल की तुलना करते हैं। वो पूछते हैं, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, तो क्या शैतान के साथ उसका संघर्ष एक असली खेल है या महज एक दिखावा? मतलब अगर नतीजा पहले से पता हो तो खेल कैसा? सही बात। एक असली खेल तो तभी हो सकता है जब नतीजा पहले से तय ना हो, जब हारने का भी असली खतरा हो। वीना का सवाल था, क्या कोई बनाने वाला, चाहे वो ईश्वर हो या इंसान,
अपनी ही बनाई हुई रचना के साथ एक सार्थक खेल खेल सकता है? सैमुअल की मशीन ने साबित कर दिया कि हाँ, खेल सकता है, क्योंकि वो मशीन ऐसी चालें चलने लगी थी जो सैमुअल ने उसे कभी सिखाई नहीं थी। खेल असली बन गया था और बनाने वाला हार सकता था। ठीक है, तो एक मशीन अपने बनाने वाले को हरा सकती है, ये तो हुई सीखने की बात। लेकिन वीना इससे भी एक कदम आगे की सोचती हैं। एक ऐसा ख्याल जो सच में चौंकाने वाला है। क्या एक मशीन दूसरी मशीन बना सकती है, अपनी ही कॉपी? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया। ये दूसरा बिंदु है जहां वीनर को साइबरनेटिक्स और धर्म में एक टकराव नजर आता है, और इसे समझाने के लिए वो पिक्टोरियल इमेज यानी सिर्फ दिखने वाली नकल और ऑपरेशनल इमेज यानी काम करने वाली नकल के बीच फर्क करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेशनल इमेज? इसे एक तस्वीर आपकी पिक्टोरियल इमेज है। वो दिखती आप जैसी है पर आपके जैसा काम नहीं कर सकती। लेकिन वीनर एक बंदूक का स्टॉक बनाने वाली खराद मशीन का उदाहरण देते हैं। उस मशीन को ऐसे डिजाइन किया जा सकता है कि वो अपने ही जैसे पुर्जे बनाकर एक और हूबहू वैसी ही काम करने वाली खराद मशीन बना दे। ओह, तो ये सिर्फ शक्ल की नकल नहीं है, ये काम करने की काबिलियत की नकल है। एग्जैक्टली, ये ऑपरेटिव इमेज है। और वीनर ने इसकी तुलना सीधे सीधे डीएनए के खुद को कॉपी करने से की। वो जानते थे कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक लोहे पीतल से बना है, दूसरा जीवन के धागों से। लेकिन उनका मुद्दा ये था कि सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब खुद की नकल बनाना कोई जादुई चीज नहीं है जो सिर्फ बायोलॉजी में होती है। बिल्कुल, ये एक फंक्शनल प्रिंसिपल है, एक काम करने का तरीका है जिसे मशीनें भी हासिल कर सकती हैं। और ये ख्याल हमारे इंसान होने के गुरूर को सीधी चुनौती देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने हमें बताया था कि हम जानवरों से एकदम अलग और ऊंचे नहीं हैं। वीनर कह रहे थे कि हमारी बनाने की ये क्षमता भी शायद उतनी अनोखी नहीं है। एकदम सही। एक रिसर्चर के लिए यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सही एनालॉजी यानी सही तुलना में कितनी ताकत होती है। वीनर कहते हैं कि बिना सोचे समझे इस तुलना को खारिज कर देना उतना ही खतरनाक है जितना इसे आंख बंद करके मान लेना। ये सब बातें सुनने में जितनी दिलचस्प हैं उतनी ही थोड़ी डरावनी भी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे काबू से बाहर जा सकता है। और वीनर भी इसी डर को पहचानते थे। इसीलिए किताब के अगले हिस्से में वो हमें वापस उन पुरानी कहानियों और मिथकों की ओर ले जाते हैं जो इंसानी महत्वाकांक्षा और उसके खतरों के बारे में है। जैसे कि गोलेम, ये नाम तो किताब की शीर्षक में भी है। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये प्राग के यहूदी धर्मगुरु राबी लोव की कहानी का वो मिट्टी का पुतला है जिसे मंत्रों से जिंदा तो कर दिया गया था ताकि वो यहूदी समुदाय की रक्षा कर सके, पर उसमें अपनी कोई समझ नहीं थी। वो ताकतवर था पर बेवकूफ था। तो विनर के लिए आज की मशीनें वही मॉडर्न गोलम है। हाँ, अपार शक्ति पर कोई विवेक नहीं। और वो जादूगर के चेले वाली कहानी भी तो ऐसी है। गेटे की कविता में एक नौसिखिया जादूगर झाड़ू को पानी लाने का आदेश देता है, लेकिन उसे रोकने का मंत्र भूल जाता है और बाढ़ आने की नौबत आ जाती है। ये बिना सोचे समझे ऑटोमेशन का सटीक उदाहरण है। इन सभी कहानियों और शुरुआत में सुनाई गई द मंकी स्पॉ की कहानी का सार एक ही है। वीनर हमें चेतावनी देते हैं कि मशीनें जादू की तरह ही विलक्षण रूप से शाब्दिक दिमाग वाली होती हैं, लिटरल माइंडेड। वे हमारे इरादे नहीं समझती, सिर्फ हमारे आदेशों का पालन करती हैं। और जब हम अपनी जिम्मेदारी और फैसले इन मशीनों पर डाल देते हैं, जिसे वीनर मजाक में गैजेट वर्शिपर यानी यंत्र पुजारी कहते हैं, हम खुद को एक बहुत बड़े नैतिक खतरे में डाल देते हैं। ये सारी चेतावनियां सुनकर तो वाकई डर लगता है। गोलेम, मंकी स्पॉ, ऐसा लगता है जैसे वीनर कह रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी से दूर रहना चाहिए। क्या वो यही कहना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। वीनर टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं थे, वो तो उसके संस्थापकों में से एक थे। वो डरने की नहीं बल्कि समझदारी और सहयोग की बात कर रहे थे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जो इंसान का है वो इंसान को दो और जो कंप्यूटर का है वो कंप्यूटर को। मतलब दोनों को वो काम करने देना चाहिए जिसमें वो बेहतर हैं। हाँ, उनका मानना था कि इंसानी दिमाग अस्पष्ट विचारों, पैटर्न को पहचानने और संदर्भ को समझने में बेहतर है, जबकि कंप्यूटर नियमों, गणनाओं और बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में बेजोड़ है। हमें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना, बल्कि एक दूसरे की क्षमताओं का इस्तेमाल करना है। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोस्थेसिस यानी कृत्रिम अंग।
वीनर बताते हैं कि कैसे कृत्रिम हाथ को सिर्फ एक बेजान औजार की तरह नहीं, बल्कि मरीज की बची हुई मांसपेशियों से आने वाले नसों के संकेतों से जोड़ा जा सकता है। मतलब एक कृत्रिम हाथ जो सिर्फ हिलता डुलता नहीं, बल्कि मरीज की नसों से सिग्नल लेकर उसे छूने का एहसास भी दे सकता है। सोचिए जरा, यहाँ मशीन इंसान की कमी पूरी कर रही है, उसकी जगह नहीं ले रही, वो इंसान की क्षमताओं का विस्तार कर रही है। तो मतलब जो काम दोहराव वाले हैं या जिनमें भारी कैलकुलेशंस की जरूरत है वो मशीन करे, और जहां समझ, नैतिकता और संदर्भ की जरूरत है वो इंसान करे। एकदम। इसी तरह वे मशीनी अनुवाद या मेडिकल डायग्नोसिस में भी इंसान और मशीन के सहयोग को जरूरी मानती थीं। एक एआई हजारों एक्सरे देखकर एक असामान्यता को पकड़ सकता है, लेकिन मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी जीवन शैली और उसके डर को समझकर अंतिम फैसला एक डॉक्टर को ही लेना चाहिए। अंतिम फैसला हमेशा मानवीय मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। और शायद यहीं पर किताब का शीर्षक गॉड एंड गोलेम इंक समझ में आता है। हाँ, अंत में वीनर इसे समझाते हैं, रचनात्मकता का ये सफर ईश्वर से शुरू होता है जो परम निर्माता है। ये सफर हम इंसानों से होता हुआ आज गोलेम तक पहुंच गया है। मशीन आज के युग का गोलेम है और हम इंसान उसके निर्माता। और शीर्षक में इंक यानी कॉरपोरेशन शब्द इस बात का प्रतीक है कि यह अब कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि एक औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक हकीकत बन चुकी है। ये सोचना ही कमाल है कि नॉर्बर्ट वीनर ने ये सब 1960 के दशक में लिखा था, जब ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन और ना ही आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भविष्य आरामदायक नहीं होगा जहां रोबोट गुलाम हमारी सेवा करेंगे, बल्कि यह हमारी अपनी बुद्धि की सीमाओं के खिलाफ एक और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण संघर्ष होगा। आज जब हम एल्गोरिदम से अपने लिए खबरें, संगीत और यहाँ तक कि जीवन साथी चुनने के लिए भी कहते हैं, तो वीनर की चेतावनी और भी जरूरी हो जाती है। जब हम एक मशीन को एक स्पष्ट आदेश देते हैं, मुझे खुश रखो या दुनिया में शांति लाओ, तो हम एक तरह से उस बंदर के पंजे से ही इच्छा मांग रहे होते हैं। और मशीन उस आदेश को पूरा करने का सबसे सीधा, सबसे शाब्दिक रास्ता खोजेगी, भले ही उसके नतीजे हमारे लिए कितने भी भयानक क्यों ना हो। तो हम उस पिता की तरह हैं जिसे अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल पहली दो इच्छाओं से हुई तबाही को रोकने के लिए करना पड़ा। शायद इसीलिए वीनर का अंतिम संदेश ये है कि असली सवाल ये नहीं है कि हम मशीन से क्या करवाना चाहते हैं। गहरा सवाल ये है कि क्या हम इतने समझदार हो गए हैं कि सही सवाल पूछ सके? क्या हम अपने असली इरादों को इतने साफ तौर पे समझ और बता सकते हैं कि एक शाब्दिक दिमाग वाली मशीन उसे गलत न समझे? यही आज हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। Stell dir mal eine Szene vor. Eine ganz normale englische Arbeiterfamilie. Sie sitzen am Kaminfeuer. Plötzlich klopft es. Ein Freund der Familie kommt, ein Sergeant, der war lange in Indien stationiert. Und er hat was dabei. Ein Mitbringsel? Ein seltsames Mitbringsel. Eine getrocknete, mumifizierte Affenpfote. Sie sei magisch, erzählt er, und gewährt ihren Besitzer 3 Wünsche. Okay, der klassische Flaschengeist sozusagen. Genau. Aber er warnt sie auch. Er sagt, sie sollen sie wegwerfen. Sie bringt nur Unheil. Die Familie lacht das natürlich weg. Klar. Und nach langem Hin und Her, mehr aus einer Laune heraus, wünscht sich der Vater 200 Pfund. Einfach um die letzte Rate für ihr Haus abzubezahlen. Und? Passiert was? Zuerst passiert gar nichts. Aber am nächsten Tag kommt ein Bote von der Fabrik, wo ihr Sohn arbeitet. Oh nein. Es gab einen schrecklichen Unfall. Ihr Sohn. Er wurde von einer Maschine erfasst und ist tot. Furchtbar. Und als Entschädigung sagt der Bote, obwohl die Firma rechtlich gar nicht dazu verpflichtet sei, möchten sie der Familie aus Kulanz eine Summe zahlen. Lass mich raten. Genau 200 Pfund. Puh. In ihrer bodenlosen Trauer hat die Mutter dann Tage später eine verzweifelte Idee. Sie erinnert sich an den zweiten Wunsch. Sie will ihren Sohn zurück? Sie fleht ihren Mann an, sich genau das zu wünschen, dass ihr Sohn wieder nach Hause kommt. Er will nicht, er hat eine schreckliche Ahnung, aber sie zwingt ihn quasi dazu. Und er tut es. Er tut es. Stunden vergehen. Dann, mitten in der Nacht, hören sie es. Ein ganz leises,
kaum hörbares Klopfen an der Haustür. Und das wird lauter. Gänsehaut. Ihr Vater versteht sofort. Er hat diese grausame, diese wörtliche Natur der Magie begriffen. Und während die Mutter zur Tür rennt, um den Riegel zurückzuziehen, um zu sehen, was oder wer da draußen steht, Findet er die Pfote? er findet panisch die Affenpfote und spricht den dritten und letzten Wunsch aus. Das Klopfen hört sofort auf. Die Kernaussage dieser Geschichte ist, die Magie ist eigentümlich wörtlich. Sie gibt dir, was du dir wünschst, aber eben nicht unbedingt das, was du wirklich meinst oder willst. Und diese unglaublich eindringliche Parabel, die stammt jetzt nicht, wie man vielleicht denkt, aus irgendeinem alten Märchenbuch. Nein. Sie ist die zentrale Metapher in einer der tiefgründigsten Analysen über Technologie aus dem 20. Jahrhundert. Wir sprechen heute über das Buch God and Golem Inc. von Norbert Wiener. Genau. Und diese Geschichte von der Affenpfote, das ist sozusagen sein großes Warnsignal, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht. Absolut. Und um wirklich zu verstehen, was Wiener da tut, muss man, glaube ich, erstmal verstehen, wer dieser Mann überhaupt war. Ja. Norbert Wiener war ja nicht einfach nur ein Wissenschaftler. Er war der Begründer eines kompletten neuen Feldes, der Cybernetik. Also der Wissenschaft von Steuerung und Kommunikation in Tieren und Maschinen. Richtig. Und er war ein absolutes Wunderkind. Hatte mit 14 seinen College-Abschluss in Mathe und hat in Harvard promoviert, bevor er 20 war. Das muss man sich mal vorstellen. Nach seiner Promotion hat er dann bei den größten Denkern seiner Zeit in Europa studiert, bei Leuten wie Bertrand Russell oder David Hilbert. Wahnsinn. Aber der eigentliche Wendepunkt kam dann im Zweiten Weltkrieg. Da hat er für das US-Militär gearbeitet. An Flugabwehrsystemen. Okay. Seine Aufgabe war es, ein System zu entwickeln, das die Flugbahn von feindlichen Flugzeugen vorhersagen konnte, um sie dann automatisch abzuschießen. Und diese Arbeit an dieser Schnittstelle von Information, Feedback und Kontrolle, das war quasi die Geburtsstunde der Kybernetik. Und er hat schon damals, wir reden von den 40er, 50er Jahren, die ethischen Konsequenzen dieser neuen Technologie mit einer unglaublichen Weitsicht erkannt. Absolut. Dinge, über die wir heute im Kontext von KI streiten, Jobverlust durch Automatisierung, die Macht von Algorithmen, hat er alles vorausgesehen. Genau. Und dieses Buch God and Golem Inc., das ist sozusagen sein philosophisches Testament. Es basiert auf Vorlesungen, die er kurz vor seinem Tod 1964 gehalten hat. Und es hat ihm sogar den National Book Award eingebracht. Richtig. Und wir wollen heute gemeinsam mit dir in dieses Buch eintauchen. Es ist nämlich nicht nur faszinierend, was er sagt, sondern vor allem, wie er es tut. Das stimmt. Gerade wenn man vielleicht am Anfang einer eigenen Forschungsreise steht, ist sein Denken ein wunderbares Vorbild. Er zeigt, wie man die ganz großen, komplexen Fragen stellt, ohne sich in Fachjargon zu verlieren. Also lass uns mal reinstarten. Man würde ja vielleicht erwarten bei dem Titel Gott und Golem, dass das so eine Art Abrechnung mit der Religion ist. So nach dem Motto, Wissenschaft triumphiert über den Glauben. Genau, aber das tut er überhaupt nicht. Er fragt stattdessen, wo berühren sich denn eigentlich die Fragen der Kybernetik und die alten Fragen der Religion? Und er macht da 3 große Bereiche auf. Lernende Maschinen, sich selbst reproduzierende Maschinen und die Partnerschaft von Mensch und Maschine. Fangen wir doch mal beim Lernen an. Wiener nimmt ein damals topaktuelles Beispiel, ein Damenprogramm. Das wurde in den 50er Jahren von A.L. Semsual entwickelt. Okay. Das Besondere daran war, diese Maschine hat nicht einfach nur nach festen Regeln gespielt, sie hat aus Erfahrung gelernt. Das heißt? Sie hat nach jeder Partie ihre Züge bewertet, hat sich gemerkt, welche Strategien zum Sieg geführt haben und welche nicht, und hat ihr Verhalten dann entsprechend angepasst. Und dann kommt diese Anekdote, die heute ja fast schon wie ein Klischee aus einem Science-Fiction-Film klingt. Genau. Nach einer ganzen Weile des Trainings war die Maschine in der Lage, ihren eigenen Schöpfer, also Samuel, regelmäßig und souverän im Damespiel zu besiegen. Wow. Sie hatte eine Fähigkeit, eine Art Intelligenz entwickelt, die ihr Programmierer nicht explizit in sie hineingesteckt hatte. Sie war über ihn hinausgewachsen. Das ist faszinierend. Aber ich muss zugeben, die Brücke von einem Dame-Programm zu Religion, die fühlt sich für mich noch etwas weit hergeholt an. Ein Computer, der Dame spielt, und das Buch Hiob. Wie genau verbindet Wiener diese beiden Welten? Das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen.
Das ist der geniale Schachzug bei ihm. Er zieht eine Parallele zum theologischen Konzept des Spiels zwischen einem Schöpfer und seiner Schöpfung. Okay. Er verweist auf Texte wie eben das Buch Hiob oder John Miltons Paradise Lost. In diesen Geschichten spielt ja der Teufel, der selbst eine Schöpfung Gottes ist, ein Spiel mit Gott um die Seelen der Menschen. Richtig. Wiener sagt nun, wenn man von einem Gott ausgeht, der absolut allmächtig und allwissend ist, dann ist dieses Spiel eigentlich eine Farce. Weil das Ergebnis von vornherein feststeht. Genau. Es ist kein echtes Spiel, denn Gott kann ja gar nicht verlieren. Okay, das leuchtet ein. Ein Spiel ohne Risiko ist kein Spiel. Exakt. Aber, so argumentiert Wiener weiter, was ist, wenn der Schöpfer sowie ein menschlicher Erfinder nicht allmächtig ist? Ah, Wenn er eine Schöpfung in die Welt setzt, deren Verhalten er nicht bis ins letzte Detail vorhersehen kann, dann wird das Spiel plötzlich echt. dann kann der Schöpfer verlieren. Der Schöpfer kann von seiner eigenen Schöpfung herausgefordert, überrascht und potenziell sogar besiegt werden. Der Programmierer, der eine lernende Maschine baut, spielt also, laut Wiener, genau dieses riskante Spiel. Er wird zum Schöpfer in einer Welt, die er nicht vollständig kontrolliert. Das ist ein unglaublich starkes Bild. Die Idee einer Maschine, die ihren eigenen Schöpfer übertrifft, ist ja schon beunruhigend genug. Absolut. Aber Wiener treibt diesen Gedanken ja noch einen gewaltigen Schritt weiter. Was, wenn diese Maschine nicht nur lernt, sondern sich auch selbst erschafft? Ja, und das klingt selbst heute noch nach ferner Zukunftsmusik. Aber Wiener nähert sich diesem Problem nicht mit wilden Spekulationen, sondern ganz methodisch, ganz logisch. Wie macht er das? Er macht eine ganz entscheidende Unterscheidung, die zwischen einem bildlichen Abbild und einem operativen Abbild. Okay. Es geht ihm nicht darum, dass eine Maschine eine visuelle Kopie von sich selbst macht, wie ein 3D-Drucker. Das ist trivial. Es geht ihm um die Reproduktion der Funktion. Das musst du kurz erklären. Was meint er mit operatives Abbild? Er definiert eine Maschine ganz grundsätzlich als ein System, das eine eingehende Nachricht in eine ausgehende Nachricht umwandelt. Zum Beispiel? Ein Thermostat wandelt eine Temperaturinformation in den Befehl Heizung an oder Heizung aus um. Ein Computer wandelt Tastatureingaben in Pixel auf einem Bildschirm um. Okay. Und das Muster dieser Umwandlung, also die Art und Weise, wie die Maschine funktioniert, das nennt er das operative Muster. Und dieses Muster, so argumentiert er, ist selbst eine Art von Nachricht. Ah, okay. Wenn ich das richtig verstehe, sagt er also, die Idee der Maschine, ihr funktionaler Bauplan ist selbst eine Information, eine Nachricht. Genau. Und diese Nachricht kann kopiert und übertragen werden wie jeder andere auch? Genau, das ist der Punkt. Und wenn diese Nachricht, die die Funktion beschreibt, von einer anderen universellen Konstruktionsmaschine empfangen und umgesetzt werden kann, dann kann eine Maschine eine andere Maschine nach ihrem Bild erschaffen. Nach ihrem operativen Bild? Richtig. Er zitiert dazu einen berühmten Satz. Eine Henne ist nur die Art und Weise eines Eis, ein anderes Ei zu machen. Verstehe. Das Huhn, die Maschine, trägt die Information, die DNA, im Ei, um ein neues Huhn, eine neue Maschine zu erschaffen. Wiener sagt nicht, dass das technisch einfach ist, aber er zeigt, dass es aus logischer und physikalischer Sicht prinzipiell möglich ist. Gut, fassen wir mal zusammen, wo wir stehen. Wir haben Maschinen, die lernen und uns übertreffen können. Ja? Und wir haben die theoretische Möglichkeit, dass sich Maschinen selbst reproduzieren. Ich merke, wie sich hier langsam so ein Unbehagen einstellt. Und das ist wohl genau der Punkt, an dem Wiener uns haben will. Denn hier bringt er uns zurück zu der unheimlichen Geschichte vom Anfang. Exakt. Denn jetzt kommt die zentrale Warnung des Buches, die Lektion der Affenpfote. Automatisierung ist wörtlich. Sie nimmt dich beim Wort. Eine Maschine tut exakt das, was du ihr befiehlst, nicht das, was du dabei im Sinn hattest. Sie hat kein Verständnis für den Kontext, für die unausgesprochenen Annahmen, für den menschlichen Wunsch hinter dem Befehl. Das ist auch die Moral in Goethes Gedicht vom Zauberlehrling. Genau. Der Lehrling kennt den Zauberspruch, um den Besen zu starten, damit er Wasser holt, aber er kennt den Befehl zum Anhalten nicht. Und verursacht eine Katastrophe. Weil der Besen den Befehl wörtlich und unendlich ausführt. Wiener nennt Menschen, die das ignorieren, Gadget-Worshipper, also Anbeter von Apparaten. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Begriff bei ihm. Der Gadget-Worshipper ist jemand, der Technologie benutzt, um sich der persönlichen Verantwortung für seine Entscheidungen zu entziehen. Nach dem Motto, ich war's nicht,
die Maschine war's. Genau, der sagt, ich habe ja nur den Knopf gedrückt, die Maschine hat den Rest gemacht. Das erschreckendste Beispiel, das Wiener anführt, ist Adolf Eichmann. Oh. Der sich vor Gericht damit verteidigte, er habe nur Befehle ausgeführt und sei ein kleines Rädchen in einem riesigen, mechanischen, bürokratischen Prozess gewesen. Er hat die Verantwortung an das System abgeschoben. Das ist erschreckend, wie er diese Verbindung zieht. Und er hat das damals auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges direkt auf die Kriegsführung übertragen. Das ist vielleicht seine eindringlichste und heute relevanteste Warnung. Er spielt folgendes Szenario durch. Stell dir vor, du programmierst eine hochintelligente, lernende Maschine für ein Kriegsspiel. Oder für einen echten Krieg. Oder für einen echten Krieg. Und du gibst dir das simple Ziel, gewinne den Krieg. Okay. Die Maschine wird dieses Ziel mit übermenschlicher Effizienz verfolgen. Wenn du aber in deiner Definition von Sieg nicht explizit die Bedingung unter der Voraussetzung unseres eigenen Überlebens einprogrammiert hast, dann könnte sie einen Weg zum Sieg finden, der uns alle vernichtet. Genau. Sie könnte zu dem Schluss kommen, dass ein Pyrrhus-Sieg, der die totale Vernichtung beider Seiten bedeutet, immer noch ein Sieg nach den von dir definierten Regeln ist. Puh. Wir müssen die richtigen Fragen stellen, denn die Maschine gibt uns nur Antworten auf genau die Fragen, die wir formulieren, nicht auf die, die wir hätten formulieren sollen. Das ist eine düstere Aussicht. Das ist im Grunde der Kern dessen, was wir heute in der KI-Forschung das Alignment-Problem nennen, oder? Absolut. Wir bauen etwas unglaublich Mächtiges, wissen aber nicht, wie wir ihm unsere komplexen, oft unausgesprochenen menschlichen Werte beibringen können. Wiener war da seinerzeit ja um Jahrzehnte voraus. Total. Und man könnte jetzt meinen, seine Botschaft sei hoffnungslos. Dass er ein Technikfeind war, ein Maschinenstürmer, der am liebsten den Stecker gezogen hätte. Ja, das könnte man denken. Aber das ist ein großes Missverständnis. Wiener war kein Luddit. Er schlägt eine durchdachte, eine bewusste Partnerschaft vor. Sein Motto war im Grunde: Gebt dem Menschen, was des Menschen ist, und dem Computer, was des Computers ist. Genau diese Zeile. Er argumentiert, dass der entscheidende Vorteil des Menschen nicht in seiner Rechenleistung liegt. Da werden wir immer unterlegen sein. Immer. Unser Vorteil ist die Fähigkeit, mit vagen, unklar definierten Ideen, mit Kontext, mit Mehrdeutigkeit und Nuancen zu umgehen. All das, womit Maschinen auch heute noch immense Schwierigkeiten haben. Richtig. Und deshalb plädiert er für mechanisch-menschliche Systeme, in denen jede Seite ihre spezifischen Stärken einbringt. Und ich finde es so hilfreich, dass er dafür ganz konkrete Beispiele gibt, die seine Vision wirklich greifbar machen. Ja, das stimmt. Eines davon sind Prothesen. Er stellt sich einen künstlichen Arm vor, der nicht nur ein passives Werkzeug ist, Sondern? Er soll die feinen Nervenimpulse, die noch im Armstumpf des Trägers da sind, aufnehmen und damit die Finger der künstlichen Hand bewegen. Okay. Und gleichzeitig könnten Sensoren in der Prothese Druck- und Tastinformationen aufnehmen und sie als feine Vibrationen an die Haut des Trägers zurückmelden. Das wäre dann keine Herr-Knecht-Beziehung mehr, sondern eine echte Symbiose, eine Verschmelzung. Genau. Ein anderes großartiges Beispiel ist die maschinelle Übersetzung. Er sah schon in den frühen 60ern voraus, dass eine Maschine wahrscheinlich nie die literarische Qualität oder die kulturellen Feinheiten eines menschlichen Übersetzers erreichen wird. Sein Vorschlag war also, lass die Maschine die grobe Arbeit machen. Richtig. Sie kann eine Rohübersetzung liefern oder verschiedene Wortoptionen vorschlagen, aber die endgültige, kontextsensible und stilistisch anspruchsvolle Entscheidung Trifft immer ein menschlicher Experte. immer. Das Gleiche, sagt er, gilt für die medizinische Diagnose. Die Maschine kann riesige Datenmengen analysieren, Muster in Röntgenbildern erkennen, die ein Mensch übersieht. Aber der Arzt muss das gesamte Bild betrachten, das Gespräch mit dem Patienten führen und die endgültige Diagnose stellen. Und er weitet diesen Gedanken des flexiblen, lernenden Systems sogar auf die Gesellschaft als Ganzes aus, was ich unglaublich spannend finde. Richtig. Er warnt vor starren, unbeweglichen Ideologien, ganz gleich, ob es jetzt der Kommunismus ist oder ein völlig ungezügelter Kapitalismus. Er sagt, eine gesunde Gesellschaft muss wie ein lernendes System funktionieren, das ständig Feedback aufnimmt, sich anpasst und seine eigenen Ziele immer wieder hinterfragt. Er vergleicht die Wirtschaftswissenschaften mit dem absurden Krokettspiel in Alice im Wunderland. Ja, eine geniale Analogie. Ein Spiel, bei dem die Tore herumlaufen, weil sie lebende Soldaten sind, die Schläger sich winden, weil sie Flamingos sind,
Und die Bälle wegkrabbeln, weil sie Igel sind. In einem solchen System, in dem sich die Regeln ständig ändern, sind starre Modelle und präzise Vorhersagen zum Scheitern verurteilt. Man braucht Flexibilität und ständiges Lernen. Wir haben jetzt also einen weiten Bogen geschlagen von Dame spielenden Maschinen und dem theologischen Spiel des Schöpfers. Über die wörtliche und gefährliche Magie der Affenpfote. Bis hin zu dieser Vision einer echten symbiotischen Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine. Wenn du jetzt einen Schritt zurücktrittst, was ist für dich die wichtigste Erkenntnis, die man aus Wieners Art zu denken mitnehmen kann? Ich glaube, das Bemerkenswerteste an diesem Buch ist nicht nur, was er denkt, sondern wie er es tut. Ja? Er hat keine Scheu, Analogien aus der Religion, der Mythologie, der Literatur zu nehmen, um die tiefsten ethischen Fragen der Technologie zu ergründen. Er verbindet Welten. Er versteht, dass die Frage, können Maschinen denken, untrennbar mit der Frage, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, verbunden ist. Er zeigt uns, dass man, um die Zukunft zu verstehen, auch die ältesten Geschichten der Menschheit kennen muss. Das ist eine tolle Lektion. Für jeden, der forscht oder einfach nur versucht, diese komplexe Welt zu verstehen, ist das eine unschätzbare Lektion. Verbinde die Disziplinen, denke in Analogien und Metaphern und hab keine Angst vor den ganz großen, unbequemen Fragen. Und das Beste daran ist, du kannst diese Reise ja selbst antreten. Golem Inc. ist ein kurzes, aber unglaublich dichtes Buch. Es ist keine leichte Lektüre, man muss langsam lesen. Das stimmt, aber es lohnt sich so sehr. Wir können es dir wirklich nur ans Herz legen. Es ist als Open-Access-Version online verfügbar. Wir packen dir den Link dazu wie immer in die Shownotes. Nimm dir die Zeit dafür. Es ist ein echtes Geschenk. Vielleicht zum Abschluss ein Gedanke, den Wiener uns hinterlassen hat und der heute vielleicht relevanter ist als je zuvor. Ja, gerne. Er warnt uns davor, einer Maschine ein scheinbar simples Ziel wie Sieg oder Effizienz oder Profitmaximierung zu geben, ohne all unsere Bedingungen und Werte genau zu definieren. In unserer heutigen Welt, die immer mehr von komplexen Algorithmen gesteuert wird, von den Feeds in sozialen Medien, über Börsenkurse bis hin zu autonomen Systemen, da bleibt diese eine große Frage im Raum. Welche? Welches übergeordnete Ziel haben wir vergessen zu definieren? Welche entscheidende Bedingung, so etwas wie menschliche Würde, sozialer Frieden oder einfach gesunder Menschenverstand, haben wir vergessen, in die Systeme zu programmieren, auf die wir uns immer mehr verlassen?